These are the village hamlets in Udaipur district, most of which are extremely remote and isolated with no proper roads. There is no local transport available and one has to walk several kilometers to reach the road. Also within the hamlet, the houses are not close to each other as the hamlets are quite spread out. Even for basic daily needs like fetching water, women have to walk a lot. Even though India has been growing at a rapid pace, the statistics on women's empowerment and labor force participation are very sad. The Global Gender Gap Report 2014 by World Economic Forum ranks India 114 out of 142 countries in terms of overall gender gap index and bottom 10 in terms of women's economic participation. The public daycare system in India is lacking, and inadequate access to affordable and reliable childcare could be one barrier to inclusive growth. Seva Mandir, a local NGO working in southern Rajasthan, runs balwadis or daycare centers for the age group of 1 to 5-year-old children in the village hamlets of Udaipur district. सुबह 9 बजे आते हैं के घंटी लगाते हैं आके और केंद्र की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद बच्चे आते हैं तो बच्चों को हम प्रार्थना करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं। इसके बाद 10:30 बजे हम हाजिरी लेते हैं बच्चों के पाठ्यक्रम विषय के अनुसार गतिविधि करवाती हूँ। 11 बजे हम गणित की पूर्व तैयारी कराते हैं। इसके बाद हम रंग के बारे में बच्चों को सिखाते हैं कि रंग की मिलान, पहचान और बच्चों के साथ चर्चा करना। इसके द्वारा वो खेल द्वारा, गीत द्वारा, चित्र द्वारा वातावरण आसपास के जो दिखाई देने वाले रंग होते हैं वो बच्चों को हम सिखाते हैं। हम बच्चों को खेल करवाते हैं अंदर बाहर का, जो बच्चों रस्सी पर टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पर चलना, रस्सी पर कूदना, रस्सी से नीचे निकलना, रस्सी के ऊपर निकलना और दौड़ने भागने वाले खेल हैं, आग बांध पट्टी बांध कर वाले खेल हैं। ये सब बहुत सारे खेल हैं, वो हम बच्चों को अलग अलग हर दिन खेल बदल के हम खेल करवाते हैं। 12:30 के बीच में खाना खिलाते हैं बच्चों को। बच्चे खाना खा के फिर सो जाते हैं। आपको हर कई जो कौम बेचो करे बा, खेती रो कौम है, हर कई कौम प्रधानो है, हाँ पर डोडो कौम है, हर कई कौम करे। तो आपने कई नुकसान वे तो थोड़ा कटी खेते न पाले नरकटी दौड़ता पड़ता। हाँ नौनन बोटन पग तावड़ा कहीं हियाड़ा कहीं उनाड़ा कहीं मनो कहीं लागे नहीं। मारो पग बड़ी राग मैं उबार लागी रो दूल्हा में घूमता रहता। बालवाड़ी एक सोरा तो खेती में रहे तो खेती में भमता फरे, दूल्हा में खाए खाना खाते मम्मी भूख लागी तो बस फट रोटी हाथ धोया नहीं कहीं नहीं अटो तो बालवाड़ी में मैडम ते बहुत हिका के बच्चा हाथ धो खाना खानो तो बच्चा भी घर आएगा एक मेरा हाथ धोना है। पहली तो थोड़ा था तूप में नदी न पानी मारे भाई फिल्टर रो पानी पिए लगर उल्टी दस्त हुई थी बच्चा तो बीमार पड़ता। अबे तो थोड़ा बीमारी नहीं है। Though we have anecdotal evidence of the benefits of balwadis, there is a need to do a formal assessment of the impact of daycare centers on women as well as children. With this study, we aim to do just that. Seva Mandir's program has evolved over the years with need. We now need to take out learnings of that model and put it in a single frame and not in an evolved form. So I think this research that Seva Mandir has been fortunate to partner with McGill University, IFMR, thanks to IDRC, this research will help in both these objectives. It will help find empirical evidence, to get empirical evidence whether a model is really unique and impacting lives. A, whether it will be able to show that or not. B, I think due to the research, Seva Mandir was forced to distill
the key elements of its model, and how can it be implemented on scale and can be taken in the rest of the country. The objective of this project is to study the impact that an affordable daycare program has on the socio-economic well-being of women, children's health, as well as other outcomes like household income, siblings' educational attainment, etc. This is a randomized controlled trial wherein we have 160 village hamlets in Udaipur district which are part of our study. A thorough process was followed by Seva Mandir to identify these 160 hamlets where there was a high need of childcare services. Post the identification, consultations, that is, community meetings were done in all these hamlets. The community was informed of what all the study would entail as well as the fact that only 80 communities will be getting Balwadis. Thereafter, a baseline survey was conducted in all these communities during the period of January to April 2015. This survey was done with all the women in the community who had a child in the 1 to 6 year age group. टोटल आपके साथ में कितने लोग खाना खाते हैं जो आपके परिवार में है? मुख्य रूप से? परिवार में देवर है अपन 6 लोग। 6 लोग। हम तो खेती का काम करते, घर को काम करो और रोजगारी में काम। रोजगार में काम करते हैं और कुछ बचत हो जाती है भविष्य के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या जैसे कि बचत तो करनी पड़ती है ना। 5 का और उससे थोड़ा ज्यादा, 6 का उससे थोड़ा और ज्यादा, तो ऐसे करके 10 नंबर तक है। 10 नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप इसमें से आप कितना नंबर देंगे कि आपको अपने जीवन पे कितना नियंत्रण है हर चीज से? जिम तिम सलाना पड़ता है। अच्छा जी। तो ये वो जो गांव में काम होता है मतलब कि रोड बनने का, इसमें जाते ही करने? हाँ, जाते हैं। लेकिन जाती हैं। The baseline survey collected extensive information on household characteristics, household income, household wealth, employment experiences of women, women's empowerment, and general health and well-being. Since our criteria for respondent selection were women who had children in their 1 to 6 year age group, it was important to get accurate date of birth. Since birth records and government documents are not usually maintained by people in these communities, figuring out the date of birth was a tough task. 7 साल का? उससे छोटा कितने साल का है? उसका जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं। जन्म तारीख आपको याद है? नहीं याद। ये 6 साल का जो बेटा है वो किस सीजन में पैदा हुआ था? जब मक्का कट रहा था तब, या जो है गेहूं कट रहा था तब, या कोई त्योहार था आसपास, होली का त्योहार था या दीपावली था, रक्षाबंधन था? कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा? गर्मी थी कि ठंडी थी? बरसात का महीना था, क्या था? बरसात में। We also collected height and weight measurements of the respondents' children. Qualitative interviews were also conducted with the parents of these children in a small subsection of our sample. After the baseline survey, 80 out of the 160 hamlets were randomly assigned to receive Balwadis. Seva Mandir began preparations for the opening of these, and all the Balwadis were opened during the period of August-September 2015. The process of setting up these Balwadis were a very important part of the research, both in the beginning of opening the centers and also during while the centers were opened. So number of meetings, the consultations at different level, block level, unit level were done, and many personal interactions were done with the village people. We also faced many challenges while opening up these Balwadis and also continuing these Balwadis. उसमें संचालिका के चयन को लेके हमें थोड़ी बहुत हमने एक बार चयन किया था, लेकिन काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आई थी, बार बार संचालिकाएं बदल रही थी। उसमें कम्युनिटी जो थी वो कहीं जिम्मेदारी ले रही थी, कहीं नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी हमने उसका समाधान निकाला कम्युनिटी के बीच में बैठ के, और उस तरह से एक समुदाय को जिम्मेदार बनाने के लिए वो एक तरह से हमने संघर्ष से शुरू किए, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बच्चों की संख्या भी वहाँ पे नियमितता के तौर पे देखें, ऑन एवरेज देखें तो 25 से ऊपर ही बच्चे रोज़ आ रहे हैं। क्योंकि कौन बच्चा अनियमित है उस कम्युनिटी में जाके उसके माता पिता को समझाने का काम हम करते हैं, ताकि जो भी बच्चा हमारा टारगेट ग्रुप है वो नियमित हो। So the study involves 3 rounds of survey, a baseline survey that was concluded in April 2015, a midline survey which will start in June 2016, and an endline which will happen in 2017, which is 1 year post the midline. We are hoping that the data collected from all these surveys will enable us to get some concrete information on the impact of daycare centers on women's empowerment, and will eventually help us influence policies on childcare in India.